And as soon as the Friday prayers ended yesterday, people came out in large numbers to protest in different parts of the country. First, it was the Jama Masjid where thousands gathered and raised slogans against Nupur Sharma for her comments against Prophet Muhammad, demanding that she be put behind bars. Then one city after the other that we witnessed videos of protests started emerging. And from Uttar Pradesh to Delhi to West Bengal to even Karnataka and Jammu and Kashmir, people descended on the streets in large numbers. What's surprising that irrespective of some of the AIMIM leaders continuing to echo Hang Nupur chants, listen in to what exactly transpired further. इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है। हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। Not only in Delhi, in Aligarh, in Prayagraj, in Kanpur, everywhere it is happening. But government of India is sleeping. I want to say very clearly, if government of India wants to save their skin, come out. Say no, they have not committed anything wrong. And if you want to arrest, you arrest both of them. And strict action should be taken. देश में नहीं पूरी दुनिया भर में हो रहा है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया है नुपुर शर्मा ने, वो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट था। और ऐसी जो स्टेटमेंट है हमारे नबी के बारे में, जो हमारे प्रॉफिट है, जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड है, उनके बारे में ये सहन नहीं होगा। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में, देश में, महाराष्ट्र में हर एक गली में प्रोटेस्ट होगा। और कोई भी धार्मिक अगर सेंटिमेंट को कोई हर्ट करता है तो प्रोटेस्ट करना तो जाहिर सी बात है। कोई भी जो वायलेंट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, जो वायलेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर नुपुर शर्मा और हमारे में क्या फ़र्क हो। ये प्रोटेस्ट जो है अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ है और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, आज गल्फ़ में जितनी कंट्रियाज़ हैं उसमें करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो है हिंदुस्तानी भाई बहनें वहाँ पे काम करती है। आज उनके आगे ये सवाल है कि अगर उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा। इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वहाँ पे बैन लगाने की बात की गई है, तो इससे जो है इंडियन इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ेगा। और इंडिया हैज़ सो मेनी रिलीजन, इतनी सारे यहाँ पे जो है धार्मिक आस्था हैं। इस तरीके की बातें करना, लूज टॉक करना, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं इससे जो है देश डिफेम होता है और देश की बदनामी बहुत ज़्यादा होती है। और जो भी इस तरीके की हरकत करता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। And even as the UP police has put AIMIM in the dock, they now says that AIMIM's Shah Alam and several other leaders did not help in controlling the situation further as far as those protests and violent protests are concerned. उनमें से नाम आया था, सारा का नाम आया था उससे पहले AIMIM के शाह आलम थे, उसका नाम आया, और यहाँ डॉक्टर आशीष मित्तल का नाम आया। उसके साथ ही जो AIMIM के जो महानगर अध्यक्ष अभी नए बने हैं, और जितने भी यहाँ जो प्रबंधक लोग हैं जो इस्लामिया या इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों का, क्योंकि वहाँ पर आसपास कहने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया, और ये सब जानते थे। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया, तो इन सब पर कार्रवाई होगी। ये वहाँ पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसी में से निकल कर ये काफ़ी लोग आ रहे थे। All right, my colleagues Amir and Mayank now join us live on this broadcast. Amir, to you first. Around 227 people have been arrested from different districts across the country, but now the police is indicating that the politicians also had a role to play, including the AIMIM, who did not do much to in fact fan off the protest, and how they were in fact further in several parts even provoking it.
Well, Richa, these 227 arrests have actually taken place in Uttar Pradesh itself. There are a number of FIRs that have been written over the last 12 hours or so, and the arrests are still on. This is the figure that was given to us early this morning. And UP Police, let me tell you, after instructions from the Chief Minister, is working very promptly on furthering on progressing its investigations into each of such protests which has taken place in all these districts wherein protests had erupted immediately after Juma Namaz. Prayagraj definitely, as we've been discussing, stands out because of the vicious nature of the attack that took place there. We just heard the ADG, Prayagraj range, wherein he clearly said that there are elements who are clearly political in nature, whether it is the involvement of the AIMIM or other left parties or local leaders who've had ambitions to make it big, using this occasion to further their political interests. All of that is being taken into account, and everybody and anybody who's found involved into either perpetrating violence through some way or having been found involved in the conspiracy behind it will definitely be punished. Now, this pattern that we see in these post-Juma protests is absolutely the same kind of pattern that we saw way back in 2019 December, where not just in Uttar Pradesh, a number of other places across various states of the country witnessed similar kind of protests. Now, everybody that for Juma Namaz, there definitely will be a large congregation of people belonging to Muslim community, and it's much easy for somebody who has vested interest into making the entire issue political or volatile to sway public opinion, to do some kind of a mischief, to make such messages viral on social media, which can immediately catch the attention of such people who congregate for Juma prayers, and especially the younger lot, which has been seen in all such cases of stone pelting or attack on the police immediately after Juma Namaz. So this is something that the police is also keeping in mind, and therefore the ADG Prayagraj zone quite clearly saying that we are pinpointing all such people who have been found to be involved into this conspiracy, and that includes parties like AIMIM and several parties with left leanings and individuals who've had political ambitions at the local level. So all such people will be taken to task. They'll be booked, they'll be sent to jail, the police will seek their police remand, and then they'll be interrogated in detail to find out the exact nature of conspiracy that went behind this last Friday's violence. All right, stay with us, Amir and Mayank. If we specifically talk about the action being taken so far, the Chief Minister has made it clear that every rioter will be reprimanded and stringent action needs to be taken with that higher level security meeting that was held. But even the police laxity will be now probed, and that's what the authorities are stating, because this was something that was possibly expected post the Friday namaz. And what kind of preparation did they really make? That will come into investigation, because some of the locals, in Saharanpur also, they are saying that police officials were outnumbered by the number of protesters, and they were not able to control, early on when protests started. We will try to get to more eyewitness to understand what happened. Sir, जब यहाँ पे वो protest हो रहा था, आपका दुकान खुला हुआ था. All right, thank you, Mayank, for that. Meanwhile, around 227 people from different districts, including Saharanpur, Ambedkar Nagar, Firozabad, Moradabad, Prayagraj, have now been arrested by the UP police because, remember, they were seen pelting stones. There were vandalism and violent clashes on the streets of various parts of Uttar Pradesh. The Chief Minister, Yogi Adityanath, held a security review meeting with top officials and gave a clear instruction to take stringent action against any anti-social elements. As Friday prayers ended, this was the scene in Saharanpur. The Namazis pouring out into the streets in a sudden protest.
crowds assembling without notice, without permission. And soon, the police was being targeted. जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ से चौराहे तक मार्च करने का प्रयास किया। तो जब चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ हमें सूचना मिली, मौके पे पहुँच के उस भीड़ को डिस्पर्स किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि वापस लौटते हुए उन्होंने कुछ दुकानों पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह लूटने का प्रयास किया और कुछ वाहन जो दोपहिया यहाँ खड़े थे उनको पलटा, उन पे लाठीचार्ज किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी इस तरह का उपद्रव किया है उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है, मीडिया पर्सनल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाएगी और सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 900 kilometers away from Saharanpur, tensions were also brewing in Prayagraj. Here too, post Friday prayers, the mood was of confrontation. Soon, they were literally mocking at the law, aiming stones and bricks at the policemen. With things going out of hand, the men in uniform launched a counter. By the time rioters were dispersed, the damage they had caused was evident. इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। Around the same time in Moradabad, a similar script was playing out. The charged crowd indulging in heavy sloganeering. With this mob seeming in no mood to leave, the police stepping in to chase them away. और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। एक आरएएफ के जवान को जरूर पत्थर की चोट लगी है मुंह पर, उसका इलाज किया जा रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी छोटे मोटे हमारे वीर जवान हैं, हम लोग कभी अपनी चोटों का जिक्र नहीं करते और ना हम इनसे डरते हैं। In stark contrast, the protest in Lucknow was civil. Even Kanpur, that had witnessed stone pelting last Friday, was peaceful today. But what happened in places like Saharanpur, Moradabad and Prayagraj has come as a rude wake-up call. Bureau Report, Times Now.